हेलो फ्रेंड्स। आज सुबह मैंने व्हाट्सएप में डाला था कि आई विल बी ट्राइंग टू शेयर सम काइंड ऑफ ए पोटेंशियल मल्टी बैगर ओवर नेक्स्ट फ्यू इयर्स। मल्टी बैगर्स में बहुत बड़े हमारे स्टॉक्स जो जाने जाते हैं, दैट इज सबसे कॉमन इज बजाज फाइनेंस एंड टाइटन। ये शेयर्स अपनी लाइफ टाइम में 3 रुपए 5 रुपए के ऊपर ट्रेड कर चुके हैं एंड नाउ दे आर इन 3000 के करीब प्लस चल रहा है टाइटन का, एंड करीब 6500 के करीब चल रहा है बजाज फाइनेंस का। उन जमानों में वे बैक यू हैड टू रीड लॉट ऑफ बुक्स टू, और एनुअल रिपोर्ट्स को देखना पड़ता था टू फाइंड आउट विच कैन बी इट। तो बहुत सारे लोग चीजें मिस कर जाते थे, बट नाउ विद advancement and of in technology and creation of multiple screeners, we do have a kind of a we are able to shortlist the stocks which can be a potential you can say क्या कहते हैं मल्टी बैगर्स। आज का वीडियो इसी के टॉपिक के ऊपर है। बिफोर वी गो फॉरवर्ड, it is going to be a short video, but this is with this disclaimer. One, I'm not SEBI registered analyst, so this is just for an educational purpose, just to stimulate you to think that way and to do self-research into it. In case you want to take a trade based on these things, please do consult your financial advisor. Stock market is a risky game. I do not guarantee results in any form. It is just a knowledge sharing platform for me. It's nothing beyond this. So before we proceed now, I request anybody who agrees to this fact that he is listening to a non-SEBI registered analyst, he can leave can stop watching the video beyond this point. Now to find this thing, we will go to a site known as screener.in. Screener.in is a free site which is there. आप इसको Google से login कर सकते हैं अपने नाम पे, and you can just create on a on the top left hand side, that is known as screens. So you get one column which is in blue, that is known as create new screen. जब हम potential multi bagger कर रहे हैं तो हमारी पहली condition है कि that the stock price has to be low. So we will use the first word is that the current price is less than 20 rupees. That means all the stocks which are running under 20 rupees should come forward to us. So we run this query, so we get 940 stocks. Top to bottom, you can say practically to search which is good, it's impossible. So we'll keep on adding the conditions on it. Now, our next is हम वो स्टॉक्स देखेंगे जिनमें मार्केट कैप एटलीस्ट 100 CR में। हम ज्यादा छोटी कंपनीज के पीछे नहीं जा रहे। सो आई एम कीपिंग ए मार्केट कैपिटलाइजेशन greater than 100. So now this will give me only stocks which has a market capitalization of more than 100 CRs. So अब हमारे 937 से कम होके करीब 137 stocks रह गए। We cannot trade in 137 stocks. Let's be very honest to each other. ये सारे stocks 20 rupees से नीचे, that is the first current market price. Then you have PE ratio, market capitalization, dividend yield, net profit quarters, quarter profit variation, sales and this thing. And last is ROC, return on capital employed. Now बहुत सारे penny stocks में ये एक issue आता है कि promoter holding बहुत कम है. If you see like Seacoast Shipping में promoter holding is less than 1% and 99% plus is with the public. So that means the promoters do not have confidence into the stocks. So आप इसमें एक हम छोटी सी line add कर देते हैं, promoter holding greater than 50%, and then we run it. अभी हम 137 थे, अब हम 137 से देखते हैं what is the remaining. We still have 63 stocks. Practically, again, very difficult to trade into all these stocks. We want one or two which fits into a very good
you can say fundamental analysis, so that we are able to get a limited number of stocks in which we can take it bargain. There is no guarantee penny stocks will turn multi-baggers. If something is cheap, there is a reason for it to be cheap. But if it becomes expensive, so there is a reason for it to become expensive. So we are finding a reason for it to grow up. So we will again now add some fundamental criteria. You have to always write word and if you want to add a comment. We will say return on equity should be greater than for a, अगर आप Google भी search करो, so it says any ROE, this is known as ROE, which is more than 20%, is considered to be a good stock. Now we are left with only 5 stocks. आप इसमें देखो त्रिपुटी फौज है, राजनंदिनी मेटल है, इंडियन एक्रिलिक्स है, सद्भाव इंफ्रा है, एंड वी हैव सूरत ट्रेड. इन सब में आप प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हो, देयर इज अ प्रीटी हाई. अगर आप सद्भाव इंफ्रा में देखें तो इट्स नंबर 70.34%, which is pretty high. अब हम ये कहते हैं हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी it is considered to be a good sign if the stock has a ROCE greater than 20. So we run this form. Now, a company which is fitting, the companies which are fitting into these two criteria, we have ended up in only 2. Tirupati Forge and Rajnandani Metals. Now we'll go and check each and every, both of them, one by one, whether we should invest in both or we should only invest in one. हमारा आज का एजेंडा था कि हम एक में ही करेंगे. So we'll find out दोनों में से अच्छा कौन है, which is the better of the two. अगर आप ROC देखो तो तिरुपति फौज की 31.78 है, इसकी 29.22, it's almost same. Promoter holdings, you have more in the Rajnandani metals and less in the upper one. Market cap Rajnandani metals की around 374 crores है, which is pretty high, and with a promoter holding of 65%, मतलब promoters ने पैसा बीच में अपना लगा के रखा हुआ है. Now let's go and first check what is तिरुपति फौज में है. इसकी मार्केट कैप 189 करोड़ है, जैसे हमने देखा था. मार्केट प्राइस इज 19.3, हाई वी हैव टच्ड 21.8 एंड लोएस्ट इज 6.73. They are basically into mass production of the carbon steel and the forged flanges. And ये auto components, bearing gears, etc. सब बनाते हैं. Roche इसका 31.8% and ROE is 29.2%. It has a face value of just 2 rupees. So it's not a 10 rupees share. It is a 2 rupee share. Free cash flow is less, is negative for minus 12.5, which is something which we will look at for. 5-year sales growth is 34.6%. And Petrosky score is 7, while G factor is 5. नीचे अगर हम आते हैं तो हमें ग्राफ मिलता है जो 200 मूविंग एवरेज से ये ऊपर चल रहा है. दिस इज द 200 DMA आई हैव टच्ड. द प्रोज में है, देयर इज नो कॉन्स फॉर द कंपनी. वी हैव ए 42.8% CAGR फॉर लास्ट 5 years. हम अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स में आते हैं तो हम लास्ट 4 क्वार्टर्स का अगर रिजल्ट देखें तो मार्च 23 में 3.52 करोड़ था, 2.93, 2.4, 2.93. सो दिस इज ग्रोइंग. सो इसका हर क्वार्टर रिजल्ट में प्रॉफिट बढ़ रहा है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज अराउंड 12.27%. ठीक है, इट्स ऑन एन एवरेज साइड. नेट प्रॉफिट आपका अगर आप देखें, नेट प्रॉफिट इसका 2.05 CR है. माइंडेड इट इज अराउंड 189 करोड़ कंपनी. तो उसमें सिर्फ इसने 2 करोड़ का ऑन ए यू कैन से दिसंबर के क्वार्टर में बनाया. उससे पहले 1.53 बनाया, 1.14 बनाया, 2.14 बनाया. 3, 4, 7, मैक्सिमम 8 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है कंपनी. अगर आप नीचे आके इसको देखेंगे तो 13 में प्रॉफिट नहीं था, 14 में 1 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़. पर रिसेंटली 2 सालों में 2022 में 11 करोड़ का प्रॉफिट था, 23 में 15 करोड़ का प्रॉफिट था. And the trailing last 12 months में it's a 13 CR का प्रॉफिट इसने बनाया. So ये करीब अब आ रहा है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन is around 13% in this stock.
अब अगर हम इसका एक नीचे कंसोलिडेटेड देखें, इसका डिविडेंड पे आउट एक बीच में ही आया था, उसके बाद ये कभी भी नहीं दे रहा डिविडेंड। ईपीएस इसका ऑलमोस्ट वहीं पे अंडर 1 रुपी चल रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में ट्रेलिंग लास्ट 12 मंथ्स में से 2% है। प्रॉफिट ग्रोथ में इट इज -26%। स्टॉक प्राइस last 1 year has gone by 53%. Return on equity has been almost the same for over the last, except last 1 year में 10% का extra दिया है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न इज नॉट अवेलेबल, सॉरी, promoters hold around 55% and the public holds 44.24%. There's no DIIs and FIIs in this stock. So total number of shareholders is around 45,700 in this stock. So Tirupati Forge में we have one negative compound profit growth -26 और बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं बना रहे स्टॉक। लेट्स गो एंड सी द अदर वन आल्सो। अदर में हमारे राजनंदिनी मेटल्स है, ये राजमेट करके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है। इसकी फेस वैल्यू 1 रुपी है, उसकी 2 रुपए थी। हाईएस्ट वी हैव सीन 21.4 एंड 8.1। ये स्क्रैप ऑफ ऑल टाइप्स, द फेरस एंड द नॉन फेरस मटेरियल में ये बनाता है। पेट्रियोस्की स्कोर 4 है, जी स्कोर इसका 5 है। लेट्स गो एंड सी ऑन द लोअर साइड। स्टॉक 200 मूविंग एवरेज से ऊपर गया था, अब वापस अपने 200 मूविंग एवरेज को टच करने आ रहे हैं, विच इज अ गुड, मतलब कि प्लेस वेयर यू कैन टेक द ट्रेड इन दिस स्टॉक। इसका CAGR उसका 42 था, इसका 70.8% है। ROE इसका बड़ा अच्छा है, 37.3% है, एंड इट इज गिविंग ए पे आउट ऑफ 73.5%। कॉन्स में क्या है, प्रोमोटर्स ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग्स 8% बेची है, बट स्टिल दे आर होल्डिंग ऑन टू 67% इन द मोर देन 67% इन द स्टॉक। I will not go and compare it with the peers. Let's go and see the quarterly results. ये 350 CR के करीब की कंपनी है। अगर आप लास्ट 4 क्वार्टर में देखो, 5.5 करोड़, 7.5 करोड़ से ज्यादा, 7.25 करोड़ एंड 5 करोड़। प्रैक्टिकली विजिबली देखने में आपको लगता है इस कंपनी ने 14, 19 और 19, 24 और आप 1-2 करोड़ और ऐड करें तो 25 से लेकर 26 करोड़ का प्रॉफिट पिछले 1 साल में बनाया है, versus 7 crores by that company, which is half of its size. मैं किसी को बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन दे रहा हूं, मैं एक वे बता रहा हूं आपको इसको एसेस करने का। नेट प्रॉफिट आप अगर देख सकते हैं 3.35, 4.59, 6.5 and 3.86, that is we are having it in this stock, which again turns out to be somewhere around about 20 CR, 10 and 18 CR के करीब इसका नेट प्रॉफिट है, which is around about 10% of its total capital it is deployed. अगर आप इसके देखेंगे 1200 ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इसने 1232 करोड़ की सेल्स की है, एंड एक्सपेंसेस इज 1206, व्हिच टर्न्स आउट टू बी 26 करोड़ का इसका प्रॉफिट आ गया है। अगर हम नीचे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें, सो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 21% है, 3 इयर्स में 91% है, 5 इयर्स में 49। दीज आर इंप्रेसिव फिगर्स। नाउ प्रॉफिट ग्रोथ इज, अगर आप लास्ट में देखो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी 36% का हमारा है, जबकि तिरुपति फॉर्ज में हमारा नेगेटिव में था। स्टॉक प्राइस CAGR इज 11% फॉर द 1 ईयर, उसका बहुत ज्यादा था, उसका 50% के करीब था। सो दिस इज अ बेटर स्टॉक ऑन, दिस इज लेस बेटर एज कंपेयर टू दैट वन। रिटर्न ऑन इक्विटी you can say is around 39% in the stock. The compounded profit growth was negative. Here it is, everything is positive. Total liabilities over the years have increased in this company. This is another a negative thing, but लोग कहते हैं कि लोन लेंगे तो liabilities, काम करेंगे तो लोन लेना पड़ेगा तो liabilities बढ़ेंगी। But last year March 23 पे जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ, जब तक उन्होंने सितंबर में डाला है, तो ये सिर्फ 38 करोड़ से इनका बढ़ा है। लाइबिलिटीज इन्होंने अपनी 50% से ज्यादा अभी तक नहीं जाने दी है अपनी टोटल। अगर आप इनका रोश देखो, 2012 में 5% था, 10, 9, 18, 25, now it's 29%. So it's increasing over last 3 or 4 years. शेयर होल्डिंग पैटर्न इज नॉट अवेलेबल, बट जितना भी इसका पता लगा है कि इसका 67% के करीब प्रमोटर्स के पास है। अगर DIIs, FIIs का नहीं है तो हम मान के चलते बाकी 33% इज विद द स्टॉक होल्ड
स्टॉक अपने पब्लिक के पास होगा. सो गिवन एन ऑप्शन, अगर मुझे चूज करना हो तो आई फाइंड Rajnandani Metals Limited a better stock as compared to Tirupati Forge based on these criteria. अगर आप इसमें प्राइस चेंज कर दोगे, आप इसको लेस देन 50 कर दोगे, तो आपके पास हो सकता है नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ जाए. देखिए आपके पास और बढ़ गए, उसमें आपका इजी ट्रिप प्लान भी आ रहा है. So it is how you pick up the stocks for actually for long-term investment into that. ये मैंने आपको easy trip planners दिखाया है. ये बहुत बार बड़े ग्रुप्स में डिस्कस हो चुका है, एंड इसके ऊपर we will not do it. हमने सिर्फ अपने अंडर 20 रुपीज के लिए रखा था. If you have any queries, you have the link of the WhatsApp group given in the description. आप ज्वाइन कर लें, and you can then we can carry on our discussion there in this platform. In case anybody doesn't like it, he can just WhatsApp me the video, what was lacking. I will improve myself. I again end up by saying I'm not a SEBI registered analyst. Please do your own research, consult with your financial advisor before you take any trade. Thank you, everybody.